है, फॉस्फोरस होती है, वो हमारे सलाइवा को अल्कलाइन बनाती है। जो हमारा थूक है वो इस तरीके का बन जाता है कि वो दवाई बन जाता है। और जो भी हमारे दांतों पे एसिडिक अटैक्स हुए होते हैं, जो कैविटीज बननी स्टार्ट होने वाली होती हैं, वो उनको फिल कर देता है ऑटोमेटिकली। वो अपने प्रोटीन से, जो कैल्शियम का प्रोटीन होता है उससे वो फिल हो जाते हैं। तो इट इज एक्चुअली टू हैव डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक milk, yogurt and like hard cheese like cheddar cheese, ये हमारे लिए प्रिवेंटिव है, प्रोटेक्टिव है। तो डाइट का ये रोल बहुत ज्यादा है हमारी डेंटल हेल्थ के लिए। अगर हम डाइट में इतना भी समझे तो हम ना केवल डेंटल हेल्थ बट ओवरऑल हेल्थ को काफी आगे तक ले जाते हैं। तो वी हैव टू क्रिएट प्रॉब्ली अ रूल फॉर आवर चिल्ड्रन की हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार उनको एक ट्रीट मिलेगी, जिसके बाद वो अपना खाना खाएं। तो वो इट विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स द हेल्थ। The next very important thing for having that bright smile and having those white teeth with never having a cavity is oral hygiene. Very simple, very effective, and you it is something that if you do well, तो लोग कहाँ पे मिस करते हैं? लोग कहते हैं मैं तो अपने दांत 2 बार ही ब्रश करता हूँ, फिर कैसे मुझे कैविटीज हो गई? लोग मिस करते हैं टेक्निक पर। सो द टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 सेकेंड 2 बारी करने से शायद नहीं होगा, ठीक है? सो 2 times a day, चिल्ड्रन मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर स्लीपिंग फॉर 2 minutes। आज सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को बता देंगे, मुझे नहीं लगता किसी के भी पेरेंट्स को पता होगा, तो अपने पेरेंट्स को बता देना सुबह और रात को 2 times a day, और अपने छोटे भाई बहनों को भी समझा देना, ठीक है? तो यूजुअली फॉर अ चाइल्ड यू वुड वांट टू बाय अ सॉफ्टर टूथब्रश, for anybody for that matter. You never want to buy a regular medium hard brush. You want to buy a soft toothbrush with a short bulky handle which the child can use effectively. uh, okay, so and also you want to use a fluoridated toothpaste which has around 1000 ppm of fluoride. तो fluoride एक ऐसी चीज है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एंटी कैविटी से। इसलिए फ्लोराइड ना केवल हमारे पानी में भी एडेड होता है, वो हमारे टूथपेस्ट में भी बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। तो बच्चों के लिए, 3 साल के बच्चों तक के लिए एक चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना है ब्रश पर, और 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना है ब्रश पर, ठीक है? ये तो हमारे हो गई द अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर अ चाइल्ड। ओके, another important thing to remember is not only we will brush the teeth, we will also clean the tongue. So we can clean the tongue with the brush till the time our child is around 6 years of age, and after 6 years we can clean the tongue with the tongue cleaner, and always rinsing between the meals. So if we do this 2 times a day for 2 minutes with the right technique, and we are going to share the right technique right now with the right kind of brush, क्योंकि हमें सॉफ्ट ब्रश यूज करनी है। रिमेंबर, ऑलवेज सॉफ्ट या सेंसिटिव ब्रश with the right kind of toothpaste, cleaning the tongue and rinsing between the meals. This is your total hygiene package. Very easy to do, and it gives you the benefit of always having a good oral health. So right technique क्या है? Right technique में हम अपनी ब्रश को दांत और मसूड़े के 45 डिग्री एंगल पे रखेंगे। दांत और मसूड़े की जो लाइन है, जो जंक्शन है, at the tooth gum line, we'll keep the brush at a 45 degree angle, और उसके बाद हम उसे साइड टू साइड स्ट्रोक्स देंगे, से अराउंड 10 times। तो 10 times उसको हम साइड टू साइड स्ट्रोक्स देंगे। ब्रश को मैनुअली नहीं हिलाएंगे, बस ब्रिसल्स को स्ट्रोक्स देंगे हम। और उसके बाद हम, और ये हमें कहाँ कहाँ करना है? तो हमें सारे आउटर सर्फेसेस को कवर करना है इस तरीके से, जैसे 3 दांत ले लिए, 45 डिग्री पे रखा और उसे साइड टू साइड ब्रश किया, ऐसे जैसे 3 दांत लिए, साइड टू साइड ब्रश किया, फिर 3 दांत साइड टू साइड 10 times and 1 stroke up, then 3 दांत साइड टू साइड and then 1 stroke up। हाँ, तो और उसके बाद अंदर के सर्फेसेस से भी ऐसे ही ब्रश को 45 डिग्रीज पे लगाया दांतों के साथ, और साइड टू साइड 10 से 15 बारी आगे पीछे किया और एक बारी ऊपर, और उसके बाद चूइंग सर्फेसेस पे किया। तो बाहर ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे मेंटेन किया, आगे पीछे के स्ट्रोक्स दिए, एक ऊपर का स्ट्रोक दिया। ओके,
ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे मेंटेन किया, आगे पीछे के स्ट्रोक्स दिए, एक ऊपर का स्ट्रोक दिया, बाहर की सारी सर्फेसेस कवर करी, अंदर से सारी सर्फेसेस कवर करी, और टॉप सर्फेस कवर करी, outer surfaces, inner surfaces, and chewing surfaces. So 1 minute for the lower teeth, 1 minute for the upper teeth, and that's your 2 minutes of effective brushing. जब हम इस तरीके से ब्रश करते हैं तो जो प्लाक जमा होता है वो यूजुअली टूथ गम जंक्शन पे जमा होता है, वो डिसलॉज होके बाहर आ जाता है, एंड आवर टीथ आर वेरी क्लीन एंड वी विल नॉट गेट अ कैविटी. नाउ द थिंग इज कि ब्रशिंग में एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें अग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी है. जिस तरीके से मैंने अभी समझाया वो एक थॉरो ब्रशिंग है, पर अगर हम उसको ब्रश के हेड को ऐसे 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 करेंगे तो वो अग्रेसिव ब्रशिंग हो जाती है. हमें साइड टू साइड ब्रिसल्स को हिलाना है, ब्रश के हेड को साइड टू साइड नहीं हिलाना. ठीक है, तो इस तरीके से हम अग्रेसिव ब्रशिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अग्रेसिव Getting kids to brush their teeth for 2 minutes, 2 times a day can be a challenge. But teaching them to take care of their teeth can help instill a lifetime of healthy habits. It may help to encourage your child that toothbrushing is fun and helps fight the bad guys, like sticky plaque. There are a lot of videos, games, and apps online to make brushing more fun. Try letting your child pick out his own toothbrush and toothpaste. After all, there are a lot of child-sized toothbrushes with soft bristles and favorite colors and cartoon characters. And fluoride toothpaste come in a variety of flavors, colors, and some even have sparkles. Just look for toothbrushes and toothpaste with the ADA seal of acceptance to be sure that they do what they say. Start to brush your child's teeth as soon as they appear. For children younger than 3, use a child-sized toothbrush and just a small amount of fluoride toothpaste, about the size of a grain of rice. When your child is between the ages of 3 and 6, use a pea-size amount of toothpaste. To begin brushing, place the toothbrush at a 45-degree angle to his gums and gently move the brush back and forth in short, tooth-wide strokes. Brush the outer surfaces, the inner surfaces, and the chewing surfaces of the teeth. To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush vertically and make several up and down strokes. Once you are comfortable with letting him brush on his own, usually around the age of 6, supervise that he is using the right amount of toothpaste and spitting it out. To help keep your child focused while brushing, set a timer. Play a favorite song or video for 2 minutes. Make a reward chart and add a sticker for every time he brushes for 2 minutes, 2 times a day. Once brushing becomes a daily habit, it'll be much easier to get your child to brush. To learn more about taking care of your teeth and gums, visit mouthhealthy.org. Yes, ma'am. You can start. I need to go ahead. So I hope that was quite helpful. A very important reminder to parents is that maybe till the age of 6, the child does not have the manual dexterity to brush on his own. So you just have to check. You have to see, you have to supervise, and you have to help. So to make sure that the child is brushing well. So thorough brushing, not aggressive brushing, is what is recommended. Uh, Another thing that I was telling you regarding mouth is a gateway to overall health is since the last few decades, a lot of oral health or dental health research has shown that, whenever we have a lot of plaque, tartar, and calculus around our teeth, a lot of cavities, it is an infectious burden on the body, and the body releases the inflammatory mediators. आजकल हम सब inflammation को इतना ज़्यादा जान गए हैं. CRP आज हर घर में एक word है. So what happens is when calculus or tartar जब इकट्ठा हो जाता है, so there's a lot of inflammatory mediators which are released into the blood, and the body is maintained in a state of inflammation. और जितने भी ले lifestyle diseases हैं, diabetes, arthritis, hypertension, cardiovascular diseases,
they all are mediated by inflammation. They are basically inflammatory disorders. So are a poor oral condition, poor oral hygiene is related to an inflammatory, it is contributing to the inflammation in your body. And Journal, they published in February 21 that people with poor oral health had more severe COVID-19 and higher levels of CRP in the first week of COVID-19. So this is just emphasizing what the science has been proving over the last few decades, that if you have good oral health, the basic inflammation on your body is low. As infection present in any part of the body will lead to inflammation, infection present in the mouth will also lead to inflammation, and it can lead to an infection creation in other parts of the body as well. So it's very important to maintain the oral hygiene. Now, समथिंग शॉर्ट ऑन ग्राइंडिंग, एक ग्राइंडिंग भी कुछ पेरेंट्स प्रॉब्लम नोटिस करते हैं कि बच्चे नींद में अपने दांत ग्राइंड करते हैं. तो ग्राइंडिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और कुछ रीजंस तो हम कुछ इसके बारे में हमें सब कुछ पता भी नहीं. वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट ग्राइंडिंग, बट व्हाट वी डू नो इज दैट इट इज कॉज्ड बाय एंजाइटी. इट मे बी कॉज्ड बाय एंजाइटी. So it could be related to some academic stress. Some, it could be related to your friends not playing with you. So it could be any anxiety at that age, or it could be a new situation in which the child is placed and the child is not comfortable. It could be a lack of calcium and magnesium. It could be related to teething. It could be related to ear pain. It could be related to pinworms. It could be related to malaligned teeth. And it could also be related to certain medications. So the good news about grinding is कि usually जब तक बच्चे 6 साल के